हे ना 44 ना एसी चालणार दोन्ही बी. 44 दोन्ही बी एसी चालणार आहे. हा.
It is not the work. I'm not feeling what अरे वो अपना वो बच्चे को एक मुझे तो कुछ आ गया अरे ट्यूसडे को वही मैम लेंगे थर्सडे को सर लेंगे और सर फिर उस चैप्टर से चालू करेंगे केमिस्ट्री जैसे होगा और कितना लेंगे केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स तो सेकंड फोर चैप्टर से सर लेंगे और फर्स्ट से फोर्थ मैम लेंगे राइट सो और अरे शेड्यूल में से पढ़ाने सर अरे पैसे नहीं चाहिए
अच्छा, अगर सूरत नहीं है फिर जाए तो बस कोरिया का अच्छा बोलता है 2027 तक के वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है कैसा हो गया था इतना स्टेबल है तो क्या Good morning, everyone. Please. Okay. So this is the entire lot of CBSE. yes sir. Okay. So hi guys, how are you doing? So Okay, look at the novel. Okay. First lecture of geography or economics. So as per the timetable, which volume did you guys bring in? Economics. Okay. So take out that economics volume only. We will be having two chapters under my side. First chapter that I will be doing is globalization and the Indian economy. Just check. It is on page number. Yes. It's on page number 204. So this is the chapter I'll be doing it in economics for you for this month. And in geography, we have a chapter called manufacturing industries. So we have good set of teachers coming in. Except me, all the teachers have debuted with you guys. Who all came in for you? And us. And I'm the third person. Jolly Madam also came in. She will also. Like maths and science, this year we will be trying to, take your SST portion also a little bit ahead. If not, there are only two teachers who will be handling. Okay. So it is a good thing for you and also good thing for us. So just put today's date, write the heading, and I'll try to give you a small introduction of the chapter. Then same notebook where you might have already written your geography notes. Geography, who has taken the lecture? Whichever notebook you are writing, did you complete that chapter? yes. Which chapter it was? Just उसका next साल के लिख दें. Globalization and the Indian economy. Chapter introduction you need first or my introduction? इधर first bench. Here. Sit there. Hey, this 7:30 morning, especially May month, not liking, huh? Not liking. That's not sure. May month matlab till last year only holidays. And also summer holiday, right? But only for this year, you just do some little bit of hard work, right? I think very soon we are expecting our 10th CBSE. ICSE is already out. Last year we expect who's the one person who's absent? On you. I could have. Why is it? Harshvardhan. How did you make? Acha. Healthier landscape. No. These guys were in with me in the 9th. Okay. Myself is Alagesh. I'll be handling your geography and economics. Okay. I hope what is my method of teaching very eager to understand. Lot of questioning and lot of answers. I don't want you to be warming up the benches and other things. Understand that?
अच्छा AC चल रहा है. And plus, it's not like that I am the boss, which I am not. For so many years I've been with duty. I want you to be little bit interactive. You understand interactive? Interactive doesn't mean kuch bhi only related to the topics. And along with the topics, I'll be giving a lot of GK. I hope you understand what is GK. General knowledge. You need it. You need it. Something related to the current topics. Because हमारा subjective ऐसा है ना. So if you can add up to me or you can query, it will be good. Plus, I'll be giving detailed notes. Whatever volume is given, it's absolutely very good. You are expected to bring volume and a note. Textbook, I feel only 1 or 2 chapter I'll be going through, I'll be marking and we'll move in. And wo worksheet जैसे examples दिया ना question answers. That I'll be asking you to solve right from today onwards. I'll be checking by coming Thursday. That I'll be coming. Probably write with a pencil. Do not write with a pen. And try to fill the gap. अभी name 2 plants ऐसे लिखा रहेगा बच्चे ने सिर्फ 2 plant का नाम लिखा. वो जितना भी line दिया है ना वो check. So next lecture I'll be checking your fair notebook. Whatever notes today I'm giving. Okay. Plus the worksheet. पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं जाएगा. It depends ki which portions I am covering and accordingly we'll go ahead. Okay, so you can be comfortable. I'll make you more relaxed, and then the subject goes smoothly and easy. So chapter 1 of economics done here. Development. Okay. So I'll not ask about development, but I might tell one thing that economics in your 9th and economics in your 10th. How do you feel? Good, huh? Very good. Ah, same है. अरे यार क्या? कितना chapter पढ़ा? So इसमें chapter number 2 we will have a detailed chapter called sectors of Indian economy. Whoever goes ahead, and then what? Third chapter, money and credit. That will go detailed into money, banking, etc., etc. And the 4th chapter that I'll be writing, we will be writing with 3 important goals of the government. The first goal in the name of the topic itself. Could anybody at least tell me, sir, this word is not new in our life? Is this word new for you? No. Yes. हाँ ना तो बोल सकता है. ऐसा new है ना? पक्का? कभी आपके लाइफ में global word नहीं आया? ठीक है. कैसे आएगा? Globalization and the Indian economy. Sorry, है ना? Now economy, who can tell me? Sir, ये तो पुराना word है, which I understand. What is an economy according to you? Economy. Please stand up. सर कंट्रीज कितनी GDP या कितने पैसे हैं एक कंट्री के पास? GDP. अच्छा ठीक है. What's your name, my dear? आदित्य. And from which school? Morning Rayas. If you're by when? My father. We have it in Seawoods area. नहीं वो छोटे बच्चों का भी क्या है? अच्छा बैठ जा. I don't know. How was your last year performance? That was nice. अच्छा है. और कोई at least आदर्श ना? आदित्य ने बोला है. And कहने से Indian economy बोर्ड में तो वही लिखा है ना? हाँ तो क्या होता है Indian economy? Let's see some girls answering. An arrangement, a setup. What is happening? Trading, business. हो रहा है कि इंडिया में? फिर since yesterday night, छोटा मोटा clashes नहीं सर बड़ा clash हुआ कल. Oh, it's not a part of economy. वो चलो जाने दो. That is a different part. But then we always believe Indian economy since 1947. Indian economy in 2025. What is the difference? Big difference? Or no difference at all? Development. Oh, development is too good. What else? Infrastructure is development. Can I say medical facilities? Good, better or best? Good. Good. He is saying good. He is saying better. Nobody is saying best. No best. Best for you. You haven't got to certain hospitals in Mumbai or even Navi Mumbai. I had seen patients coming all the way from London, doing the surgery here, and 10 दिन पूरा मुंबई घूम के फिर भाग जाता है.
Because I don't believe the treatment given in London is one costly है. अभी मुझे याद है to get my tooth appointment some part of US, I have to wait minimum 6 months. Plus वो treatment का जो पैसा मेरे से लेगा, I can come back, settle with my family sometime and go back. And treatment भी उतना. But India, सर आज लेके जाओ सर, एक बेड खाली करके चल तू बैठ जा, दूसरा चलते अंदर जा, है ना, क्विक ट्रीटमेंट है हमारा. उधर पहले तो देखेगा, वेल द प्रॉब्लम गुड, यू कैन कम आफ्टर 6 months. Sir, little bit more problem. Okay, 5.5 months. So we always believe that what I am going to introduce to you is globalization in which economy? Very good. So there are 3 important goals which the government of India introduced under this program only, not the program. We use that 3 words like this. Till now, what does LPG stands for you? पक्का? तो डाल दे इधर. ये आपको नहीं बोल नहीं डालना है, पक्का पक्का, चलो ठीक है. तो L for this topic stands like this. ये सुना है या नहीं सुना है? सुना है, ठीक है. I'll tell you, I'll not ask you the meaning. Then P stands for, what is this? Privatization, correct? And G, sir, अभी आपने बोर्ड में लिखा. So from today onwards, what is LPG for you? यार मॉर्निंग में दम नहीं है. चलो फिर से. Good, I'm happy. So what does this word liberal stands for? What does this word privatization stand for? And the word, it's already there. So these 3 goals were introduced under one big program which was introduced in 1991. What is this NIP? This morning artists are only short for me. Yes. National, very good. Indian policy. What politician concept? It is new industrial policy. Policy तो हम लोग ने right बोला है ना? I mean, why do we need a new industrial policy? Because the old policy had some drawbacks, correct? Because I always believe you cross 9th and come to 10. What is the specialty? आप लोग का 9th में पास हो गया. That is a special. क्या यार उसमें डाउट था आपको? सर अभी मैं स्कूल में ना सीनियर है सर, है ना? अगर 11th 12th नहीं है क्या? हाँ ठीक है चलेगा ना. फिर भी क्या हो गया? सीनियर सेकेंडरी में मैं बढ़ा, हायर सेकेंडरी में देखा जाए. सीनियर सेकेंडरी मीन्स अप टिल 10th, हायर सेकेंडरी मतलब 11th and 12th. तो जब गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लाया, बिफोर टू दिस प्रोग्राम देयर वर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स, लॉट ऑफ ट्रबल्स and lot of loopholes. So what are these loopholes? We try to give you some strict rules and you escape through the loopholes. है ना? And we Indians are very good in finding out that. मैं थोड़ी चिल्लाया. तो सर आपका जो policy program है ना, there is some flaws in it. You know what are flaws? Which flaws? Drawbacks is there. So there was 2 important persons that I will be naming. We will be writing their name. One was the then Prime Minister and the other person was the then Finance Minister. Yes. पहली बार सुन रहे हो ना? So the then Prime Minister was late, no more. His name was this. सुना है? नहीं सुना. He was a Congress Prime Minister. And who was the then Finance Minister? Again late. We'll put his name as Doctor. Let's see who can guess it. Come on. Manmohan Singh. Very good. So the entire program of NIP was the cream work of these 2 people. Especially, they can put 2, 3 or whatever stars you can say. He was from economics background. And being the finance minister, he identified the Indian economy में changes लाना जरूरी है. And changes था, but under which program? Liberalization,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी मैं आपको नोट्स तो नहीं दे रहा हूँ, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यस, क्या रहेगा लिबरलाइजेशन अकॉर्डिंग टू यू? एटलीस्ट लिबरल वर्ड सुना है? सुना है? क्या है, क्या है? कौन सा चेंज? आई थिंक आपको चेंज चाहिए लगता है। हाँ सर, हमारा लाइफ रूटीन चल रहा है। व्हाट अ चेंज? पहले तो 7:30 को मत बुला। दैट्स अ बिगेस्ट चेंज। वो भी मे मंथ। यार सर, हमारे साथ तो क्या हो रहा है? आज भी क्या पता कल मॉर्निंग सुबह प्लाकार्ड लेके लेगा, नो मोर लेक्चर्स। मत करो, आने वाले का अलगेश नहीं बोल के दिया। So we believe liberal क्यों चाहिए? Because the policies before to 1991 were blocking the development of industries. Do you understand blocking? अरे, आपके लाइफ में है कुछ ब्लॉक्स? है। I don't need to say it. पहले तो मोबाइल के ऊपर से स्टार्ट होता है ना? घर में फिर बोलते कुछ नहीं। Although you got 98%. मम्मा मैंने 98 लाया, तो क्या हो गया बेटा? हाँ 10th भी है। हाँ तो है ना, तो अभी तो स्टार्ट हो रहा है। क्या होगा? मतलब कुछ नहीं होगा, तेरा मुंह बंद कर। फिर दूसरा ब्लॉक आता है, पापा फिर आते एडमिशन तो ले लिया अभी। यार ऐसे टेंशन लेते जैसे कि एडमिशन खुद का किया है ना? एंड मुझे लग रहा है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। पापा एक काम करो, मैं ऑफिस जाता है, तुम जाओ। क्या मतलब? कभी एक दिन जाओ तो मालूम पड़ेगा हमारा लाइफ में क्या ब्लॉक्स है, क्या चैलेंजेस है ना? तो इट्स नोबडी एवर कम टू योर क्लास एंड आस्क आज बिल्कुल टीचिंग नहीं है, अच्छा आज मैंने पढ़ाऊं मैंने, तो ऐसा होता है यार ये नॉर्मल है या कुछ गड़बड़ है? एंड बोलता आज के बाद जिंदगी में बुक साथ में रखेंगे, सर को लेके जाके चेक करो। नो पर्सन हैज सेड ऑल दिस। जो भी आएगा पहले डराएगा आपको। I think I remember my maths teacher during my school days. Certain topics he himself will tell, this is the toughest part of algebra. And what is your reaction? Sir पढ़ के आओ, फिर मैं समझेगा। क्या आपको ही toughest लगता है? आप क्या मुझे सिखाएं? है ना? Then science teacher has his own or her own dialogue. लाइफ में बहुत जरूरी है। और जो बोलते केमिस्ट्री, यार मेरे घर में केमिकल्स नहीं है, फिनॉइल वगैरह है ना? एंड फिर फिजिक्स ऑफ मोशन, ग्रेविटी, न्यूटन, आइजैक। मतलब सर ये क्या है लाइफ में? एप्पल सर में गिरा इसका मतलब आपको पूछ के खाने का था। हाँ, और वो इंडियन रहता तो उधर ही खा के खत्म करता था स्टोरी। क्या आइजैक न्यूटन ने क्या कर दिया सर, और उसी का हमको पनिशमेंट मिल रहा है। बायोलॉजी, हाँ 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड बाकी ठीक है सर, चलता है। 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर हमारा सब्जेक्ट आया एसएसटी। मैडम बोलती है हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्या जरूरत है? कौन आया था? मर गया क्या? लेकिन मेरा हिस्ट्री तो कोई पूछता नहीं कि बेटा कितना मुश्किल है 3 घंटा बैठना। फिर ज्योग्राफी, फैंटास्टिक सब्जेक्ट है, वो बेचारा नेचर के बारे में बोलता है, कभी सॉइल के बारे में बोलता है, कभी वाटर के बारे में बोलता है। पर मुझे क्या करने का? ब्रेक में टिफिन के बारे में तो कभी पूछा क्या उसने? तेरे मम्मी ने टिफिन दिया, बेटा तूने खाया? एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज दैट इकोनॉमिक्स इन टीचिंग? सॉरी, पॉलिटिक्स तो बचपन से मैं कर रहा हूँ, है ना? एंड पॉलिटिकल साइंस वो आप पढ़ो। इकोनॉमिक्स ठीक है, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया लेके पढ़ लूंगा, तो इकोनॉमिक टाइम्स आता है, पर ये मैंने सब सब्जेक्ट का कवर किया। हिंदी ओके, हाँ हिंदी है, इंग्लिश नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा। तो देखो बच्चे ने सारा सब्जेक्ट बोला, उसमें एक सब्जेक्ट उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, यस पीटी। घर में भी नहीं, स्कूल में भी नहीं, क्या होगा मेरा? I remember the earlier college or school where I was working, if I allot them a PT period, girls and boys will come and touch my feet. Sir, आप हमारे भगवान है सर। मतलब किस बात के लिए? 3 महीने से PT नहीं दिया, आपने दिया। बोला अरे और भी लेक्चर नहीं चाहिए,
जाने दो भाई, खेल के आएंगे. And PT is also important. So we say this blocks in your life has to be removed. कैसे remove करेंगे? Go and bang the principal. अच्छा, she's ready. Oh my God. And pull the teacher out of the class. नहीं sir, आप रहो sir, but मुझे disturb मत. And then slowly we make some changes. Which changes? Liberal way, simple way, easy way. अभी बच्चा अभी टीचर को बाहर भगा रहा है, पर टीचर को मालूम भी नहीं है कि वो बाहर भगा रहा है. सर आप इतना जल्दी आते हैं, अच्छा है, और चिल्ला नहीं से बैठो सर और कूल हो जाओ. सर क्यों चिल्ला रहे? मतलब इंडायरेक्टली बोले तू मुंह चुपचाप बंद करके बैठ जा और टेंशन नहीं लेनी. What does it mean? Don't teach anything, sit down. So you are making the changes in a which way? Abrupt way or liberal way? Liberal way. That is what liberalization. So government tried to remove all the blocks which is in the development process of industries. अभी समझ में आया what is liberalization? अभी ये privatization है. इसमें हमेशा मुझे मेरे पापा का बहुत याद है. He was a central government employee and he was a very happy employee when the salary used to be credited in his account. बाकी टाइम तो बस बोलते रहता था. Very good post he had. बस मुझे याद है जब उनका साल का जो एनुअल कैलेंडर आता था, he will count the calendar इधर उधर. मतलब पापा क्या करे, छुट्टी गिन रहा हूँ यार. हाँ, सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले छुट्टी इंपॉर्टेंट रहता है. और यार ये मंथ मैंने 2 छुट्टी वेस्ट किया. मतलब संडे में आ रहा है ना वो, है ना, संडे में नहीं आना चाहिए. मंडे आ, ट्यूसडे आ, वेडनेसडे आ. मतलब पापा फिर ऑफिस में रहकर काम कर लेते हैं कभी कभी. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है, ऐसे ही चलता है ना. तो वी से आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, है ना. देन इसका ऑपोजिट एक सेक्टर है जिसको हम लोग कौन सा सेक्टर बोलते हैं? What is the government of India going to do? Either from central or from state, they will identify the units which they consider as, come on, units भी कभी सिक होता है नहीं होता है? होता है. हाँ, क्या होता है? Normally government says if from 10th or maximum 15 years, if government का कोई section है ना, only adding this. What is this? I know it's the opposite. And government बोलता है वो सिक है. तो फिर बच्चा बोलता है हाँ सर रुको सर, मैं भी 14 years का है और पापा हर रोज सुनाते रहते सर, है ना, ये खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है, क्लासेस में पैसा बढ़ रहा है, स्कूल में. अब बोलते कौन बोला ये सब खर्चा करने के लिए? आईफोन लेके दो, आई विल नेवर रिग्रेट, है ना. या महीने का 2 पिकनिक लेके जाओ, दैट आल्सो आई विल लव. स्कूल का ठीक है करो आप दो. तो गवर्नमेंट क्या करता है कि if there is no chance of making that unit once again good, it will give the with certificate. तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सॉल्यूशन मैंने एरो भी डाला है, देखो कहाँ जाएगा वो. वेरी गुड. इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच सेक्टर? पब्लिक सेक्टर टू, इसको हम क्या बोलेंगे? अरे प्रोग्राम कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूं? प्राइवेटाइजेशन. So what is privatization? Guess. Yes, सब तो है. सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाना, क्योंकि वो जाना वो खुद ही निकल जाता है. ट्रांसफर होना. वेरी गुड. Put it in the English words. Come on. Transfer of public units to private sector is called as absolutely. Can you tell me any sector in India which is 100% public even today? जो गवर्नमेंट प्राइवेट में नहीं देगा. मालूम है ना, पब्लिक सेक्टर भी इंडिया में और प्राइवेट सेक्टर भी है. कैन आई से डिफेंस? यू नो व्हाट इज डिफेंस? कल देखा सर क्या छोटा है. एंड एवरी पीपल वेर शाउटिंग वाह वाह. मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रश करते क्या हो गया? अच्छा मम्मी कॉफी नहीं, रुको रुको वो चल रहा है उधर अटैक. as if you and me are going and attacking and coming back. And पापा तो ये बैठो या आईपीएल क्या और कुछ. Whereas in USA, private sector 100% defense. मतलब आर्म्स बनाना, ammunition बनाना, उसको बेचना, वो सब प्राइवेट सेक्टर बेचता है.
और इंडिया में एक और एक सेक्टर भी था जो 100% पब्लिक सेक्टर है, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज, सुना है ना? बट एक ट्रेन है जो प्राइवेट सेक्टर में चलता है, तेजस, तेजस करके एक ट्रेन है, वो है, बट मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट का है। कैन यू नेम एनी प्राइवेट सेक्टर? बहुत है, रिलायंस, ओके, और क्या? आईटीसी आईटीसी, अच्छा मालूम है फुल फॉर्म उसका? फुल फॉर्म था बट था, अभी नहीं नहीं है है, अभी नहीं। इंडियन के बाद कैन आई से टाटास? हाँ सर, लवली। देन महिंद्रास। टाटा वन का मुझे लग बट आई वाज नॉट श्योर मेरा गवर्नमेंट ठीक है, नहीं, you are saying is right, don't worry, no need to be sure. Right? So both public and private sector are there, but those sector which has become sick will be moved to which sector? Private. Absolutely. So could anybody tell me what is liberalization? Simple words, even looking at the volume. Have, yeah, liberalization. Turn karo. Let me see how. Very good. Barriers or restrictions. What about privatization? आराम से करते रहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपने वो नोट्स में बोलो जो मैंने बोर्ड में लिखा है। किसी ने बोला ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक यूनिट्स, विच यूनिट्स? ऐसा ही सीखे लिखा है ना, ट्रांसफर ऑफ 6 पब्लिक यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी ग्लोबलाइजेशन आया, आई थिंक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एज पर यू एंड मी, उधर वर्ड दिया है, वी कॉल इट एज इंटरलिंकिंग। आर वी गुड एट इट? ड्यूरिंग द एग्जाम यू लिंक विद योर फ्रेंड वेरी क्विकली। क्या होता है सर, उसको हम लोग नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं। क्या Nowadays, I have seen while I go for examining duty, they don't even open the mouth. आई से हो जाता है। MCQ का आंसर बोल रहा है और 2 बार ब्लिंक किया ना। And sometimes I have seen this one supplement has moved from one bench to the another bench. मैंने मुझे ये क्या? Sir, I told you sir, switch off the fan. The fan का supplement हवे से उठ के गया ना उधर। मतलब उसका वो भी हवे से दिखा है। So here I am trying to teach you to be global. So there are broad mind में सोचो। What is that broad mind? India is trading with major countries of the world. Unlike China, why China is not like India? क्या है? because they have strong words. Strong resources वो भी है। India is said to be an open economy. Economy आया, whereas China is not 100% open economy. You know that? It goes for lot of exports, but restricts its imports. वो खरीदेगा नहीं किसी से, but बेचने के लिए ready है। China means You should stand up and if you want to, then you will not talk about it. Thank you. So whenever we say the word global, I am interlinking. I said Indian economy, correct? To that of which economy? To that of. And how do I link? Through trade, correct? Can I say through business? And there is one word I think ये थोड़ा सा न्यूज में आता है. We have bilateral. Any idea what is bilateral? हाँ, she is correct. हाँ, lateral क्या है? मीटिंग्स, 2 कंट्री के बीच में मीटिंग होता है। इसका और एक वर्ड भी है। Shall I say this? Come on. What is this? Multi. We have stopped pronouncing as multi. Multilateral agreement. India signing agreement with more than 2, 3 or 4 countries. So when I am explaining the process where Indian economy is linked to which economy? Global economy. I am referring to a program which is called as. So absolutely, anybody have any queries? So put the heading already you might have put, write the introduction part which I am giving. Don't be all little bit control kar lena.
early morning has gone every branch. This is a common phenomenon. एक पहले ऐसे देखते हैं फिर योनी यहाँ से वहाँ तक जाता है. चलो चलो. Indian economy is best understood. Indian economy is best understood as AS. Mixed economy with several changes. Mixed economy. Why it is mixed? Public and private sector. Okay. With several changes in its method of functioning. With several changes in its method of functioning. If I'm going fast, let me know. I'll reduce the speed. Okay, hey, are you able to catch my words? Okay. This is just a plain what is Indian economy. Second sentence or second bullet point. Since 1991, आप उसको क्या बोलते हैं? 1991. NIP was introduced, right? That's NIP का full form एक बार लिख लो, फिर बाद में लिखने का. NIP was introduced. Under the then Prime Minister, the then Prime Minister, उनका नाम ऐसे ही लिखना, late लिखना, is no more. Under the then, उस टाइम का Prime Minister, right? क्या हो गया? Under the then, ठीक है? PM लिखो, उधर लिखो PM. उधर है ना बोर्ड में नाम उनका, वो लिखो. And the then finance minister. And the then finance minister. Write his name without any spelling mistake. Okay. Next point. Three main goals. Three main goals. Exactly. Data measuring का वैसा लिखो L below P and below G. Like the top. Three main goals. Handwriting be little bit क्या बोलते हैं हिंदी में ईमानदारी से लिखो. Board exam nobody will toil their head for your handwriting. They'll cut your marks. Beautiful नहीं है तो भी at least समझना चाहिए सामने आप बस. समझा? हाँ. Right full form. L के लिए सामने लिखो liberalization. P के लिए लिखना privatization. वैसे बटन. Good. Don't see. Get up. Body language speaks everything. You know what is body language? Okay. टीचर को देख देख के यान करते रहने का. फिर ऐसे बोलने का. सब दिख रहा है क्या? Relax. Early morning है यार. आप लोग इतना एनर्जेटिक दिखना चाहिए कि why? Whole night study. Whole night study. यार ना मोबाइल पकड़ रहा है. चल जाए. Okay. Is this topic very heavy? ओके है अच्छा है ना और अच्छा सिंपल करके बताओ ये ठीक है is this method okay for you guys am I putting big pressure on your head not so much well तो बता फिर क्या नहीं is my favorite students it's nice क्या बताइए
सब है सब है सब है, इसमें क्या है, इसको इसको क्या करना। हाँ, यू टेल व्हाट इज द प्रोग्राम। ये क्या है रे, अम्मा की तरफ बैठा है, सीधा बैठना है। as if his wife and बच्चा are crying in the house। इतना कम उम्र में तुझे फैमिली का प्रेशर है क्या, बता। नहीं है पक्का। तो आपके बच्चे वगैरह उधर मतलब तेरे दोस्त। चलो चलो cheer up, हाँ बोलो। हाँ I don't know। He's asking me। जो तुझे पसंद है बोले। पसंद है हाँ, क्या होता है वो। You look sick। Central government becomes sick, तो मोदी को क्या Yeah, out of these three, which one you find it difficult समझने में, फिर से globalization difficult लग रहा है। नहीं मैं दूंगा भी दूंगा, वो ठीक लग रहा है। हाँ देखो, अगर ग्लोबलाइजेशन डिफिकल्ट लग रहा है ना, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आई होप एवरीवन लाइक्स बाइंग न्यू शूज। बहुत पसंद है। इट्स लाइक अ बाटा शू, पसंद है इसको, कंपीटिंग विद एडिडास, नाइकी, रिबॉक, है ना, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है। जैसे आप शू का गली में जाता है, पापा को बोलता है बहुत अच्छा दुकान खुला है, पापा से बाटा, अच्छा बेटा आप एडिडास, बेटा वो महंगा है, वो आपके लिए ना, बट बाटा में आप खरीद दो पापा, मैं आता हूँ। Then I think this you youth people like certain coffee shops, if at all, or certain eateries, or sir McD's, KFC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, टाइम पास करने का अड्डा है। हम लोग इसको MNCs बोलते हैं, ये भी आएगा। Guess what are MNCs? Very good। अच्छा फुल फॉर्म बोल दिया। मल्टीनेशनल कंपनीज। एडिडास इंडिया में भी बिकता है, एडिडास चाइना में भी बिकता है, सर पूरा दुनिया में बिकता है सर। और बाटा शायद अपने गली में बिकता है, वो भी कोई खरीदता भी नहीं। लाइक इंडियन वड़ा पाव इज कंसिडर्ड टू बी द बर्गर ऑफ इंडिया। हाँ सर, सस्ता भी है, ठीक है। कैन इट compete with the cheeseburger? I don't know what all the variety of burgers McDonald's sell. Can it compete? हाँ हो सकता है, but नहीं हो सकता। Who is an MNC? A company which is having head office in one country, branch all over the world. Can we say the local vada pav of Kharghar is sold in London? बेलापुर में कोई उसको जानता नहीं, लंदन के है ना। जिस सेक्टर में बेचता है, दूसरा सेक्टर में बोलो कौन है, इधर एक दूसरा वड़ा पाव है। So what I am trying to give you, global, we are connecting to the world audience. If I don't know how good you are in with your social sites, so called, maybe I don't want to be, but then you want to connect to your friends. अभी दिन रात उसी के साथ रहता है, उधर ही बेंच में बैठे, रात में चैटिंग चालू रहता है। और जना मैथ से चलना बहुत खड़ू से है ना। But if I am connecting to my friend whom I have not met him for last 10 years, दूसरा इतना क्या busy रहता है, and he is working some part of Europe, अभी भी है, he is in Netherlands, Amsterdam. Neither I can connect to him, nor he can come and meet me. तो मैं उसको सोचा, hi friend, how are you? I'm sleeping, don't disturb. And similarly, he calls me, well, I'm tired. So don't you think we are connecting globally? Correct है ना। फिर ग्लोबलाइजेशन का सिंपल आपका एग्जांपल देता हूं सर। ये जो मूवीज है ना सर, हमारे घर में ना सर देखने नहीं, और ये जब से रेटिंग्स क्या आ गया है ना, ये रेटिंग मतलब मुझे देखने का रहता है, बट पापा बोलते वायलेंस इज देयर लॉट ऑफ। हमारे स्कूल में आके देखो सर, है ना, अडल्ट कंटेंट बोलता है मेरा पापा, क्या है बायोलॉजी देते तो सब दिखा तुम्हें क्या। एंड मुझे याद है मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स इवन टुडे मे नॉट बी योर होम, माय मदर स्टिल नाउ ऐड वगैरह आएगा ना, वो चैनल चेंज करने में बिजी रहता है, और लड़का लड़की देख रहा है। एंड पापा वांट्स टू चेंज द चैनल, और टीवी की चैनल चेंज नहीं होता। लड़का बोलता है चले ना पापा, मतलब जो भी करने कर दो। एंड पापा टेंशन में मम्मी को बुलाता है, बोलते ये क्या है, रिमोट काम नहीं कर रहा है।
तो मम्मी बोलती है मोबाइल हाथ में रखा है, रिमोट तो बातें नहीं। एंड आज खत्म हो जाता है और लड़का बोलता ठीक है ना, बोलो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपको बोलेगा अंदर जाओ, मैं देख लेता। तो जब ग्लोबल बात करते हैं, आई ऑलवेज बिलीव दैट टीचिंग इन अमेरिका और टीचिंग इन फॉरेन कंट्री इज अ रियल जॉब वेयर आई कैन नॉट शाउट एट माय चाइल्ड, वो आज ही जाएगा उधर मेरे नाम का हो गया, एंड द पुलिस विल कम एंड विल से यू आर मिस्टर एलेक्स, प्लीज कम विथ मी। बोल क्या? The one of your student has asked that you are mentally harassed him. You were looking at him sharp. I said you were shouting very badly. तो मुझे 2 हफ्ता लगेगा मेरा नाम को निकालने के लिए। इधर पूछो मत सर, यार नहीं बोलता है। And one of the parent has not put a plaster or a bandage whatever because that boy fell down while playing football. The next day he was in the school without the treatment. And teacher ने very प्यार से बोला क्या हो गया, और लड़के ने बोला yesterday my dad ना, and within 20 or half an hour the police went to the office where the dad was working. हाँ ये सच है उधर, and that man was very politely pulled out of his office and he was taken to the nearest so-called police station and he put his brain down to that police, मैंने कुछ नहीं किया, I will call your son. And लड़का बैठ के जवाब दे रहा उसके सामने, एंड फिर लड़का बोला कल क्या बोला था। तो ये ग्लोबल का बात हम क्यों करते हैं, बिकॉज द रूल्स द रेगुलेशंस आर नॉट सेम, बट देन इज इंडिया टुडे ग्लोबल इकोनॉमी? इज इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी? सर वो पता नहीं, मेरे स्कूल के बारे में पूछो सर, कोई बताऊंगा क्या इट इज ट्रूली अ ग्लोबल इकोनॉमी? हाउ many foreign companies are operating in India. Is it so? Indian companies are also operating foreign. Am I like China closed door policy? नहीं सर, हम बिंदास है, आजा। फोर्ड आ गया है, फोर्ड तो अभी बंद भी हो गया है। Now we are just waiting for Tesla to launch. I think very soon आ भी जाएगा. Then we have a very good car called Jaguar. इंडिया में उसने टाटा के साथ कोलैबोरेट किया है, you know. So we are saying today you and me are very much happy because India has adopted this in which year only? अभी समझ में आया ग्लोबल। अब जब नोट्स तुम्हारे you will get understanding more. ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा है, क्लियर है? चलो लेट्स राइट व्हाट वाज द लास्ट स्टेटमेंट। अच्छा उतना ही है, गो बिलो। हाँ, by adopting these 3 goals, by adopting these 3 goals, government ensured, by adopting these 3 goals, government ensured basic needed, basic without needed without, changes for basic needed changes for a true global economy. Now let us break free from writing. Take your volume to 104. Sorry, it is 204, is it? I'll check your reading. I think everyone reads very good English. Very good. Okay. So you no need to stand up. I'll just make one person from my right to read. Very quickly I answer it here to check whether he or she is sleeping or not. फिर बोलने का नहीं, मैं सुना नहीं, ये नहीं। Whoever is unable to read, then है ना, प्राइवेटाइज हो जाएगा उसका। चल 204. We'll start with my very good student. Yes. Wait, सारा फ्रेंड्स रेडी है क्या? पूछा? ठीक है, अच्छा अभी मैं रीड कर रहा हूँ। Process of globalization. हाँ, Process production across countries, interlinking production across countries. no, he's reading first page, my dear. What's his name? 204 is. बोलना, वो कौन सा पेज में बैठा है? यार तेरा दोस्त को पसंद है तो नहीं? Foreign trade and integration of अंडरलाइन कर लो, इंटीग्रेशन। integration of markets. अरे यू आर टू गुड। रुकना आराम से, मेरे से पूछ सर ये क्या बोलता है? What is integration? Sorry.
What is integration? You can write interconnecting. वो word भी आएगा. हाँ. Correct. Go ahead. Good reading. Production across countries. Okay. Trade was the main channel connecting distant countries. Hmm. MNC, multinational corporation. Okay. MNC is a company that owns or controls production and Open bracket. It's a company which owns. वहाँ से bracket open करो. मैं भी दूंगा, but ये थोड़ा simple है. more than one nation. हाँ. Following points explain how production is being carried out across countries. Okay. I said burger. How many do not like it? Everyone. It's like McDonald's say in 1 minute, 1 minute, they sell close to 6 to 7 million burger. तो ये जरूरत क्या है सर? मतलब उसका large scale production. नहीं, very large. Can I say our local vada pav in 1 minute? कोई करता नहीं. 10 मिनट में एक कस्टमर आता है, वो भी बोलता है अच्छा नहीं तो मैं कर. What is the benefit of this MNC? It is going to sell his or her product throughout the world. Is it benefit? Highly benefit. देखो जब मैकडॉनल्ड हमारा एरिया से बंद होके जाता है, तो what is the loss to India? So many lakhs of people were working. हाँ, unemployment हो जाता है. तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट carefully welcomes McDonald, carefully signs the agreement, and carefully बोलता है इधर ही रहे तो मत चलो. है ना? Carry on. MNC set up offices and factories for production in different regions of the world because of cheap labor and other resources. Hey, are you able to hear what is he reading? Say no. तो मैं बोला ना. आराम से पढ़ और clearly पढ़, कोई जल्दी नहीं. हाँ. This is designed to keep the production low, and हाँ. MNC can earn. Underline that word. Production low नहीं रहेगा, production cost रहेगा. Without the book, I am finding it mistake. चलो ठीक है. I will give my dear friend good rest. हाँ. हाँ. Please you can. So what's your name? Devansh. Devansh. Let's go here. So my dear friend Devansh. In this process, the goods and services are not only produced globally, but production also gets organized in complex ways. Consider the following example. Just 1 minute, Devansh. Under that word complex way. Why is that word complex coming there? सर प्रोडक्शन एक जगह पर होगा तो इजी है ना. Large scale. हाँ, लार्ज स्केल हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है. आप कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? हाँ, कैसा इन्वेस्टमेंट करेगा? सबसे ज्यादा हमारा इंडियन प्रॉफिट कैसे देगा, है ना? दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. हाँ, राइट. Example of production process and steps. Product, industrial equipment. Second, designing in research centers US. वेरी गुड. Cheap and manufacturing space. अभी उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया है, फिर उसका स्टेजेस बताया है. Is one company or one country all the stages going on? No. अभी जैसे I don't know how many have gone in or you might be having also Tata Jaguar, only इंजन बाहर से है, बाकी स्पेयर पार्ट्स तो इंडिया में ही बनता है. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम. I'm a big fan of Rolls Royce. मैंने अभी तक बैठा नहीं है. There was a car called Maserati. Have you heard about? Wait. I have driven also, not here, some where I was working. And Maserati car, I always believe India में आना चाहिए. It's like a local कौन सा हमारा 600 या 1200 सीसी का जो बाइक का आवाज है ना, वैसा आवाज देता है. Vroom vroom. And that accelerator and the clutch is not in the legs, it is in the hand, like a Lamborghini. I've seen Lamborghini. Yes. मतलब उसका स्टीयरिंग के साथ उसका क्लच रहता है. And just एक press करो, automatically second gear में जाता है. This car is a real Rambo. What is slogan saying Rambo? Probably does that you car एक क्या थक्का आवाज जैसे आता है. So if I am saying that car is to be coming to India, what will happen? Only engine आता है. ये पूरी तरह से बनेगा. Is it a good thing for Indians? क्यों भाई? Employment मिल रहा है सर. And हमारा बाजू में नहीं पर है. एक सुजुकी मारुति रखा है. दिन रात ऐसा दिखा था जैसे कि रोल्स रॉयस को धोता रहता है ना. फिर अंदर बैठते समय ऐसा प्राउडली बैठता है जैसे कि लिमोजिन चला. गाड़ी स्टार्ट होके खत्म हो जाता है. ठीक है सर, प्राउड इंडियन है, हमारा कंट्री से नहीं जी. मारुति पहला बनता था बाहर से, अभी इंडिया में. कैरी ऑन.
cheap manufacturing location China, assembling of product and market. देखो चाइना इज वन कंट्री सॉरी where nobody says कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो चाइना से नहीं बनता है। इनफैक्ट हमारा बहुत सारा कार उधर से बनता था पहले, अभी मोदी जी ने वो प्रोग्राम के बाद बंद किया। There was a program I was attending in that the Geo World in BKC, where one of the gentlemen from China was there, and he was asking everyone, cost of this iPhone, project of it, 1.5 lakhs. Look at all people say, $10 please. Well, that $200, $500, $10 and 8 iPhone का cost in China. हम उसको $1,600 से में लाया सर, क्या महंगा बेच रहा है। तो चाइना ने ओपनली बोल दिया जो अमेरिका आपका गुची है ना, गुची रियली रनिंग फ्रॉम द ब्रांड फॉर गुची, लेडीज डाल के आते हैं गुची, मुझे कितने का, ओनली 1.5, हाँ, और अंदर चटनी डाल के इतना महंगा राइट है ना। He says manufacturing Gucci for them is not even $10, only $7. So that is China doing both types of नहीं, वो है, वो बात में थोड़ा सा गुची क्या करता है, एक तो ब्रांडिंग है उसका। मतलब गुची को मैं अगर कार्गो स्टेशन में बैठ के $10 में बेचूं तो बोले सर्विस का हाँ है ना, पहला डाउट यही है जैसे किसी को हुआ है, अभी तो $900 में बिका था सर, $10 में क्यों बेच रहा है। आप बोलेगा वो आपके की तरफ पकड़ के when selling Adidas shoe which is worth ₹15,000, no the पाँच सौ रुपए में बेच रहा है, पहले चेक करेगा Adidas ही है क्या, क्योंकि हमारा इंडियन लिमिटेशन तो बहुत केयरफुल है। Adidas का एक अल्फाबेट निकल है ना, Adidas ऐसा होगा कि वो एच भी इतना स्टाइल में डालते ना तो ठीक नहीं दिखे सर, ओरिजिनल है ये एच, अच्छा छोड़ो ना सर, इतना डिटेल में कोई नहीं देखता, सारा प्रिंसिपल हो गया। एंड द प्रोडक्शन इज इन यूएसए, मतलब उल्लासनगर कमाल, और कल किधर था, यूएसए में, उल्लासनगर क्या कुछ और उल्लासनगर में था कैसे देता है उल्लास लोकल रेंज। So we believe this branding is a big trouble. अभी आप बाटा को ब्रांडिंग करने बोलेगा, ठीक है सर, तो कौन पैसा कर तो वेदन का हाँ इंडियंस लोग पहचान लेंगे क्या, नहीं फोर्स एन अमेरिकन को बाय बाटा तो बोलेगा टाटा, can we say Tata to Adidas on the glass the line of the sir anyway. So we believe what he was reading, it is the cheapest cost of production एक ही country है पूरा दुनिया में, बोलता है made in China sir। चाइना में भी लोग अपने अमेरिकन ऐप यूज करते हैं ना, चाइना का उसका ब्रांड आप लोग हाँ वो तो बहुत कल निकाला, हाँ इस सस्ती इवन हमारा भी एक जीपीएस है मालूम है, वो मैंने मेरे मोबाइल में लॉन्च किया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, हिंदी में रहेगा जीपीएस में, एंड हमारा लोकल कोई तो बोलेगा स्वागत है आप जीपीएस, आपको कहाँ जाना है, मुझे खुद आता नहीं है, बंद करके निकल जाए ऐसा बोलती भी है, मैं ऐसा मजाक करता हूँ, बट वो अमेरिकन जीपीएस अच्छा है। Now we take a right turn to the left, उधर मैं तो राइट में जाऊँगा, राइट टर्न टू द लेफ्ट, क्या अनाउंसमेंट चल रहा है, इंडियन जीपीएस को बंद करो सर। हमारा इंडियन गवर्नमेंट स्लोली लाइक यू आर सेइंग चाइना में बहुत सारे ऐप्स है जो उनका खुद का है एंड वही करने में चले, एंड वो मैंड्रिन में ऐसा कुछ बोलते हैं जो मुझे 3 दिन लगे, व्हाट डिड शी से, एंड वो सामने वाला भी मैंड्रिन में बात करते हैं, तो वेरी गुड यार छोड़ दो, whereas in India speak Marathi English and American cooks ऐसा करते हैं, you don't know, I will teach you. So here we are saying कि the branding is trouble, और branding बनने के लिए 1-2 दिन नहीं लगता है। अभी जैसे everybody knows the symbol, if I draw this, and sir ये क्या है, टीचर बोलते यार मैं तो ये आपका आंसर शीट में टिक डाला है और बच्चे ने उधर लिखा है, वेरी गुड मैडम, मतलब ये ब्रांड आपके माइंड में है,
अभी बाटा का क्या ब्रांड है आई डोंट नो, ब्रांडिंग तो है कुछ ऐसा कुछ डाला रहेगा ना, कोई नहीं बेचा. So that is why Bata couldn't raise the price. And you go to Colombo, if at all you are going with your family, there is a place called Colombo, I forgot. All your Adidas t-shirt, all your Reebok, जो भी है महंगा, आपको इंडिया का पैसे में 700 रुपए में मिल जाएगा. बेस्ट. फिर वहां से बन के जाता है यूएस, फिर मेड इन यूएसए का टैग लगता है, तो कितना डॉलर देगा भगवान जाने. I brought this one. What is that? Pashmina shawl for my mother. It costed me $125. But मैंने मॉम को बोला अरे पश्मीना शॉल कश्मीर का नहीं, वैसे लिख दो. वो हमारा इंडिया नहीं, तू बाकियों के लिए लेकर आ रहा है ना, मेरे लिए. अभी वो शॉल किधर गया, शी हर्सल डजन. अभी मुंबई में शॉल का जरूरत है क्या? नहीं, किसी ने बोला शॉल अच्छा मिलता है. मैंने बोला वो इंडिया का बनता है, तू लाएगा या मैं पैसे भेजूं तुझे? तो इतना इंटरेस्ट बंद कर, मैं ला रहा हूँ. And then I buy this Italian shoes, sole. बट उसमें मेड इन इंडिया लिखा है, फिर मेड इन इटली का टप्पा मार. लेदर इंडिया का है, क्या करे सर, मेड इन इंडिया बोलेगा तो कोई नहीं खरीदता. बट नाउ वी आर स्लोली चेंजिंग, है ना. चलो लेट्स रीड ऑन. Technical help to highly skilled engineers in India supply all over the world. Conclusion: MNC saves 50 to 60% in production. Underline that word 50 to 60%. क्या सेव करता है? तो लिखो कॉस्ट. कॉस्ट में उसका उतना बच जाता पैसा. What sir कुछ नया? It's nothing that because that chia seeds ना, little bit of lemon juice. Sauce. Interlinking production across countries. Underline this word interlinking. शायद मैंने भी बोर्ड में लिखा है interlinking. ये second lecture I give you a little bit of more notes, huh? But I know that early morning I don't want to start with my notes. Investment: the money that is spent to buy assets such as land, buildings, machines, and other equipment is called investment. Put all this into bracket. Assets का मतलब क्या है? ये आपको पालनपुर चैप्टर में था ना? हाँ, क्या कौन सा कितना टाइप का assets था? Capital and fixed capital, working capital और क्या था? टेम्पररी एंड फिक्स था, फिर एक फ्लोटिंग था, फिर ह्यूमन कैपिटल था. पालनपुर में लवली चैप्टर ना. चलो ठीक है. Foreign investment: investment made by MNC. Just stop it here. This बच्चा read. Advantage to local companies. MNC can provide money for additional investments like buying new machines for faster production. MNCs might bring with them the latest technology. Underline that word. Take that. Very good. Very good. Use it. Please. Ananta. So look at this. इसको पकड़ो अभी. Interlinking of production by MNC. The following points explain how MNCs are spreading their production and interacting with local producers. Underline that word spreading and interacting. You understand the meaning? What is interacting? Local producer से बात करेगा. जैसे जैगुआर आने से पहले टाटा के साथ उसने टाई अप किया, तब जाके उस कार को इंडिया में लॉन्च हुआ. ओके. By setting a partnership with local companies. Underline that word partnership. I guess economics से गया जब एक फैक्ट्री का वैल्यू क्रैश होता है फैक्ट्री का है डॉलर का सॉरी It's not crashes. रीजन क्या उसका जैसे कि उसमें आता है इसका वैल्यू गिर गया ठीक है. In the second lecture I'll explain. आप थोड़ा सा advanced level का पूरा बताएं. Simple level. का वैल्यू नहीं गिरता. सॉरी money का वैल्यू. It is appreciate and depreciate. हाँ, good. By using local companies for supplies, by closely competing with local companies and buying them out. MNCs. What is that buying? The लिखो merger. Merger नहीं तो acquisition लिखो. मतलब local company को एक बार MNC खरीद लेता है. Acquisition. This is the word. He's right. I love all these interesting words in economics. Acquisition. How do you pronounce?
क्या करता है, जबरदस्ती छीन लेता है? नहीं, एग्रीमेंट करके ही ले लेता है, पकड़ में रख लेता है। Go ahead. MNCs exert strong influence on production taking place at different and distant locations in different countries. Okay. As a result, production is widely dispersed locations. Underline that word, dispersed. Carry on. Control of production. Large MNCs in developed countries place orders for production with small producers. Garments, footwear, sports items are examples of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. Underline small producers. Like if I say sports items, we have certain bats, cricket bat, which are manufactured in India. But British government बोलता हुआ हमारा pillow है, pillow. You know what is pillow means? She knows it very good. सारा ब्रिटिश पिलो कश्मीर का ही है। And जब इंग्लैंड बैट्समैन आता है एकदम टॉल और एकदम इंसान की तरह, फिर हमारा पतला सा स्पिनर आता है अपना, and वो ऐसा भाग के आता है और उसको आउट कर देता है, and वो तो वही था ब्रिटिश पिलो कश्मीर से मिलते हैं। सच है। Even that कुक्कुबुरा, you know what is कुक्कुबुरा? हाँ, वो भी इंडिया में ही बनता है। हाँ, क्या आंसर? अन्याय में आंसर। And you will go to Kashmir one part, I don't know which part, you can buy that same bat which will cost you 50,000 in Mumbai, hardly 5,000 में मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं, आपके सामने बनाएंगे तो लेके ले लो, लेके जाओ। सर कश्मीर एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी है क्यों नहीं, मतलब आप जाकर सर न्यूज़ में देखूंगा मैं आपको। न्यूज़ में ठीक है सर, जाओ सर, नो प्रॉब्लम। एंड पर्पसली बच्चा मैथ्स टीचर सर कश्मीर देखने का, जन्नत में जाने का, जन्नत मतलब फ्री है सर, फ्री है, नॉट ऑलवेज। हाँ, even I am personal, you know, this person to go and visit there. तुरंत हमारा बच्चा जो मेरे से बहुत तंग आता है, सच्ची, ठीक है मेरे दोस्त। Sir, lucky that you survived. Survive. But I have also been preparing now. You have gone? Yeah, But then how long before? Last year. It's very nice place. Where? And the place where that incident, it's a very sad thing. They say it is Switzerland or कुछ तो एक point. Windy Switzerland. आपको सब मालूम है? मतलब local area सुधर हो. चलो सुधर. Because it's a replica of Sudan. चलो जाने दो। मैं अभी दिल्ली नहीं गया है। It's like दिल्ली दूर है, उतना भी दूर नहीं है, राजधानी में बैठ लेके जाके छोड़ देंगे। कुछ काम भी तो रह जाना, you can leave also. चलो जाने, let us come out of Kashmir. Products are supplied to MNCs, which then sell these under their own brand names to the customers. Large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery, ये and पूरा ब्रैकेट बना, लार्ज एमएनसी के पास पूरा पावर है, प्राइस भी वही डिसाइड करेगा, क्वालिटी भी वही डिसाइड करेगा। कैन यू एंड मी इन द what is this? I'm not a Picasso to make a painting of yours. Put all the hey, listen, I know that sitting 19 minutes is not habitual, but last 3-4 days you are lecturing starting na. Monday se hua na, and I take care of my students to the max, है ना? इधर से नहीं है क्या? हाँ क्या बोल तेरे दोस्त को, कौन बोला? ठीक है, ब्रेक में मिल चौड़ा बोल एक काम करो, एमएनसी करके एक डेफिनेशन आता है वो लिखिए, फिर अपन फिर तैयार करेंगे। If you are little bit uncomfortable, body ache, बाहर stretching करके आ सकते हैं। और एक बार दूसरा सब जिम का स्पेशलिस्ट है ना, जिम जा रहे हैं दोनों, लेकिन यार बॉडी पे करना ये जाता है, चलो टेंशन आ रहा है। Right up, MNCs are those companies, अभी slowly जाओ, MNCs are those companies which have their HO. What is HO? Headquarters. Head office. Correct. Head office. चलेगा. वो HQ बोलूँगा, headquarters. In one country, and branches
in different countries and branches in different countries operating simultaneously. If feel free any of the spelling, operating at different centers. One more, then we can wind up, then we can read again. Large scale production. Simultaneously लिखा, full stop. Large scale production distribution. Large scale production, distribution is the highlight of MNC. Example, whichever you like to write, McDonald's, KFC, any one of them. Shall we go ahead? Okay. Are we good? Say relax. We have time here. Okay. Anaga's reading complete. I want you to read. Tell your name. Hi, hello. बोल सकते हैं मेरे से. ये क्या है? Nice है. कैसा बना? फिर से बता रहा है. ये रुके. बच्चे नहीं. कार्तिक. स्कूल. कैसा है भाई कार्तिक? सही में टेंशन बहुत है. चलो कार्तिक. read. Explain how does MNC investments expand their production? MNC investments expand their production by purchasing local companies. Example, target food. अरे ये क्वेश्चन आंसर ये नहीं करने का डायरेक्टली करा दो. हाँ. Foreign trade and integration of foreign trade. Foreign trade was the main channel connecting countries in the past. Trade routes connecting India and South Asia to markets both in East and West. Foreign trade result in connecting the markets or integration of markets in countries. Very good reading. I love writing. Karthik करते हैं कुछ ऐसा? नहीं करते. So here Karthik has asked me to explain foreign trade. Karthik ने बोला क्या? नहीं बोला. What is foreign trade, my dear? Bit louder. Trading for international. For trading with foreign different countries. Very good. और क्या है? बस इतना ही है. सी रूट्स हो गया है. मैं अगर मैं फ्लाइट से गया तो पास में है, दूर नहीं है. I'll say very different. पास. अच्छा, okay. At least you guys understand. Trade between two different countries. You accept? मैं थोड़ा short form use करता हूँ. Trade between two different citizens. Correct? और क्या है? सब different ही है, कुछ common नहीं है. Using different currency. या तो common currency use करेगा. वो क्या होता है generally? Very good. USD होता है. Pounds भी होता है. No problem. And finally, is it within the country or across the boundary? Across the national boundary. इसका opposite एक और एक trade है, which is not like this. कौन सा trade रहेगा? National boundary. Guess. Boundary. Trade between two states. Opposite. Domestic trade. Correct है? अभी यही terms में मुझे कौन बताएगा? What is domestic trade? ये समझ में आया? देखो I'm reading. Trade between two different countries. Between two different states. Two different states. Very good. Two different states. और क्या रहेगा? Second sentence. क्या रे महाराष्ट्र का एक citizen है फिर गुजरात का होगा? बोलो girls, come on, pick up. ये sentence उधर डालना है. Different है. So two different. Very good. Citizens of the same country, है ना? Citizens लिखूंगा और same लिखूंगा. और क्या है? Using same currency यार. INR. Local क्या होता है? Don't feel bad. I'm just doing. What is INR?
And और क्या है? Within Within the within state the- boundary. Very good. Within the bound. Last question, then we will go with the reading. फिर foreign trade दे दूंगा आपको. Which one, according to you, है ना, is more complex or more tension? International, foreign. You hear exact? Sir, ये foreign trade है. So बहुत सारा checking वेकिंग होती है कि सामान Checking होता है, baking क्या होता है? checking Simple है यार. American wants to cheat Indian. और इंडियन बोलता मैं तो ऑलरेडी cheated है. अभी इंडिया उल्टा है ना, ये पहले कुछ है ना. So who is the body which controls this confusion, tension भरा trade? एक international body है ना. What is this? World World Trade Trade Organization. Which controls which trade? Domestic trade. International Very good. Guys are too brilliant. अभी समझ में आया? So put down the heading in your notebook. Foreign trade. What do you mean by foreign trade? ऐसा concepts के साथ सीखेगा ना, you'll never forget. क्या बोल रहा है? कोई? Candy. ये पहला नाम क्या देगा? भूल गया. Ganesh. Kanish. हाँ, Kanish. बोल दिया. Kanish. और Kanish. क्या है ये? क्यों ऐसा? आपने बोला ऐसा? उधर सर. ठीक है. Trade between two different countries. Examine TWO2 लिखना. हाँ, normally English में rule है. Two different countries. Come on, two different citizens. Using common currency है. Different currency. Currencies का तो plural में. हाँ. अन्य का is finding different right. Two different countries, two different citizens, different currencies, or वो मैं उसके लिए short में करूँगा. Or USD. ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? तो मुझे भी मालूम था, पर क्या है USD? International common. इंटरनेशनल में कॉमन. Universal. कनिष्ठ. फॉरेन करेंसी. मैं तो नहीं. All countries में valid है. कौन सा करेंसी है? कांस्टेंट की सारी तरह रोज countries में में टीवी ओपन approved करना, है. डॉलर ऊपर और हमारा करेंसी इसको सारी एक्सचेंज. countries में approved है. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी वो लिखना है. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. अभी बहुत जल्दी इंडिया का भी करेंसी आ रहा है जो अमेरिका को शायद, हाँ, इंडिया का नहीं है, ब्रिक्स बोलता है. They are going to bring some new currency. BRICS. Now this BRICS. Brazil, Russia, yeah. Right. Internationally accepted currency. Close the bracket. Across the national boundary. Across the national boundary. Full stop. That's all. Example लिख सकते हैं. Trade between citizens of India and USA. Trade between. एग्जाम्पल के लिए ई एक्स आता है कि ई जी डालते हैं? जी डालता है. हाँ, जी डालो ना. ई एक्स क्यों डाल रहा है? हाँ, वो तो डाल ही है. नहीं, I don't know. You guys use ई एक्स instead. हाँ, trade between citizens of India and US. चीन का पारा ये भी है आपको.
WTO. What is that? World Trade Organization. WTO, it's interesting. The greater full form also is a global organization. They refer to global body. Global body which controls and ensures smooth functioning of trade. Ensures smooth functioning of foreign trade. Plus, it's exactly economic stuff here. There are more 10 minutes to go. Okay, the last 5 minutes we will keep it for chit chat. Chatting related to studies. Or shall I say last 10 minutes? Yeah, very good. Very happy birthday to sir. आप लोग पूछो या मैं हाँ वेरी गुड हाँ दिमाग yes how was your 9th standard performance nice average क्या कोई बेस्ट नहीं बोल रहा है कनिष्क बेस्ट बोलेगा है कनिष्क क्यों यार क्या हो गया कौन सा पेपर खराब गया था बेटा क्या ना हाँ गुड ठीक ना यार गुड बॉय सर कौन सा एक्सक्यूज अच्छा कर देखो आई फील ना व्हाटएवर वाज योर 9th स्टैंडर्ड मतलब अभी 10th में है ना आप लोग पक्का है क्या मेरे को कुछ लग रहा है she is forcing the ability to do that side especially I know the science and maths you can might take over but here you are getting lectures ना good कोई काम करो जैसा यूपी का जो सिलेबस जा रहा है ना संडे टेस्ट है फिर सैटरडे रात को याद रहता है सबका टेस्ट है सो मतलब है ना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते जाओ एंड ये मत पता नहीं आप लोग दिल से कितना हमको गाली देता रहेगा देता भी रहेगा पर ठीक है इट्स ओके एवरी ईयर ये हमारा वर्किंग पैटर्न है एंड यू विल फील दैट बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्लस ये जब once the school reopens there are a lot of things that school will pull you example you tell me I don't know what you call it projects what is assignment and इधर है ना last year यहाँ तक कितना हो गया सर हम लोग को 9th में एडमिशन हुए थे सारे आउट ऑफ I feel I should take admission in this school. हम पिछले 6 महीने से एक से प्लान कर रहे हैं सर मुझे कितना बेटर कहीं हाँ फिर अब क्या होता है सबकी इसके बीच में पढ़ाई नहीं होता भी आ रहे हैं तो क्या होता है ना once your school reopens you will be you know different program so now this 1 month of study approximately 25-30 days you will be ahead of the school post. That doesn't mean when the school reopens, you go and sit on the head of the teacher. Good, yeah, too good. है ना? क्या जिक्र? मुझे नहीं जिक्र. चलो, be polite with them, है ना? And then simple thing है. I always believe my students' life should be very colorful. है? देखो colorful in what sense? Without disturbing your studies, you can all your must. These are naughty people, ना? अभी नहीं करेगा तो क्या फिर सारा बात गिर जाएगा कभी कोई करो बिल्कुल करो है ना गणेश करता तू सब क्या क्या मेरा लेक्चर में क्या रहेगा तो तुझे मालूम है ना भूख लटकाएगा then what will happen with that test आएगा फिर बोर्ड एग्जाम का वो tangible आता है practicals है फिर internals है I don't know what all the things I've seen certain schools are too good only बच्चे का लाइफ को बिगाड़ रहे
क्या सेंड करो वो सेंड करो ये करके, अरे उसको पढ़ने तो दे, but at the same time you should not waste your time. I feel this mobile is the best instrument to find things. But उस मोबाइल को भी आप लोग बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। बच्चे लोग लास्ट ईयर तक मेरा 4 व्हाट्सएप ग्रुप था, इस साल आप पढ़ेगा मैं किस बात कर दूं, वो आपको पूछ रहा है हमारे पसंद है ना? So try to cut off from certain things which might waste your time. And UTS plan beautiful. I think last year जो था उसको मालूम है, क्या मालूम है? ये last year क्या? Portion जैसे जैसे एक टेस्ट चैप्टर्स हो रहे they are putting a test ना, do not miss that test. हाँ, do not. इसको हो गया आपने आपको। अगर मिस भी हो, अगर मिस किया है, तो कर लो ना जल्दी आता है। हाँ, चल बात। ठीक है जल्दी कर लो। एंड अभ्यास करके भी है, लास्ट ईयर जो था ये साल भी है। एंड देखो व्हाट आर अनुभव सर इज प्लान, यू गाइस ट्राई टू यूज इट। अभी देखो जब फैसिलिटीज मिल रहा तो यूज नहीं करते हम लोग, है ना? नहीं करते ना, करना। एंड देन आप देखेगा कि बाय द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त देन यू विल सी योर एग्जाम्स विल स्टार्ट। आई थिंक एग्जाम्स किसी को टाइम टेबल मिला है 7 जुलाई से। एंड अपना पोर्शन में क्या क्या बोला है, फर्स्ट चैप्टर या बस वो तो ऐसे ही कॉपी में पूछना है। And you will feel कि this method of learning CBSE has already launched some changes. I think अभी ये साल के लिए कुछ बड़ा implement नहीं किया है। हाँ, and maybe by next year or this year, not very sure. अभी wait करो। वो 2 बोर्ड एग्जाम कैसा रहता है, एक फेब में रहेगा, अगर आपको लगता है कि फेब का जो मार्क्स कम पड़ रहा है, you can go for one more improvement exam. तो वो 10th का क्या बोर्ड एग्जाम का रूटीन है ना, यू विल बी प्लेस्ड इन अ कॉलेज और अ जूनियर कॉलेज। अभी तो स्कूल ही बोलते हैं ना, जूनियर कॉलेज बोलते हैं। दैट इज द मेन एजेंडा। बट 11th 12th का जो मार्क्स है दैट विल डिटरमाइन योर। तो 10th का भी हल्का मत लो। आई नो मेजॉरिटी पीपल वांट्स टू डू दिस आफ्टर द कोर्स चल रहा है इंटीग्रेटेड। अरे व्हाट इज इंटीग्रेटेड? हाँ, कोई कॉमर्स में जा रहा है, कोई साइंस में जा रहा है, कोई नीट में जा रहा है, और बोले नहीं सर मैं तो नीट में सोच रही हूँ, कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर मेनी एंड माय स्टूडेंट्स सेड आई डोंट वांट टू गिव एनी, बट एडमिशंस लेने के लिए ना अच्छे आईआईटी में या अच्छा आईआईटी में आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। एंड एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? हाँ कुछ नहीं सर, आप बोलते हैं आपने शायद अपना टाइपिंग नहीं किया है लेकिन अभी इतना एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। अभी दो स्टूडेंट्स वांट टू डू दिस लॉ है ना, उसके लिए क्लैट आ गया है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी उस दिन मैं एक इंटीग्रेटेड का पैरेंट से बात कर रहा था, तो आई वाज कंफ्यूज्ड। तो उसका पापा अपना यूपी के लड़की है, सर मेरा लड़के ना बीडीएससी करेगी सर, एमबीबीएस नहीं चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला अभी उसके माइंड में मत डाल, लेट हिम ट्राई फॉर एमबीबीएस। यू अंडरस्टैंड ना? अगर उधर कट ऑफ कम पड़ा तो गो फॉर बीडीएस, नहीं सर एमबीबीएस के लिए बहुत सख्त है सर। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कट आफ्टर 10th व्हाट आर यू गोइंग टू डू। I have seen majority of the students are decided by their parents. Is that right? Yes. Yes. क्या सोचा है तेरा पापा ने? बस तू भी क्या सोचा? टेंशन नहीं सर, पापा तो बना नहीं, मेरे सर पे डाल। हाँ, देखो it's not they are forcing on you. You sit with them, talk to them. ये बोलेगा टॉप किया ना, 2 झापड़ मारा मारा। हाँ देखो, it's not that engineering is very difficult. You can crack. But there are certain parents, मैंने last year इधर यही रूम में काउंसलिंग किया था, आईसीएसई का मम्मी हो गया, बोलते सर इसको जो करने का करने को, मैंने तो कोई फोर्स नहीं किया, बट अच्छा परसेंटेज लाना is easy. And let me tell you, CBSE is not as difficult like your, है ना? but इतना easy भी नहीं है, वो easy है, टफ लगता है। पोर्शन तो आपको बहुत कम है,
हाँ I don't know कभी ICSE का दिखा syllabus? ICSE में था, sir. फिर क्यों आ गया फिर इधर? Geography अलग है और history अलग है and they have economics, they have CS, CA, commercial applications, commercial systems, those are each. हाँ देखो we are not going to compete with ICS. जो हमारे पास है वो करेंगे क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे. ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने का अभी जैसा मेरा लेक्चर कैसा लगा आपको अच्छा लगा ओके लगा. I don't want you to be getting into pressure of your brain. You go relaxation. And when you are relaxed, automatically you take it. She passed that. Getting ready for boxing. So life में ना हंसो पहले. Relax करो. तो ऐसे basically and feel that you are pressurized by your parents because parents अपने लिए तो चाहिए. But मेरा बच्चा अपने लिए तो nice meeting. Welcome back. Directly बोले सर विश्वास है बहुत अच्छा है.